Right. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellencies, President Sahib, Assalamu alaikum. I'll just quickly, because of the lack of time, take you through Shaukat Tareen Sahib ki speech quickly, and then a lot of notes within the booklet which was provided. Obviously, all recognize that there is need for Islamic finance, being a Muslim state, and all these things. So my few slides are going to show you what challenges are we facing in order to achieve the vision of State Bank of Pakistan and what Shaukat Tareen Sahib spoke about. Currently, the Islamic banking industry accounts for 18.7% of the total deposit of the Pakistan banking deposit market, and the vision of SBP is to take it to 30% by the year 2025. And this will be done by 22 players in Islamic finance, which include the dedicated and window operations. अगर ये होता है तो हमारे, just to give a size indication, currently the deposit market is 3.5 trillion rupees, and in 5 years time, if that happens, it will multiply by 3 times to go into 10 trillion, because वो सिर्फ percentage growth नहीं होगी बल्कि पूरी industry ऊपर आ रही है. तो the potential of this industry is to go 3 times in size. So obviously we need a lot of support and infrastructure things availability. जिस तरह तरीन साहब ने बात की है, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन, सेविंग्स, लो कॉस्ट हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एसएमई. आजकल हम आरडीए पे बहुत फोकस कर रहे हैं. इन सब में इस्लामिक बैंकिंग इज़ रियली प्लेइंग इट्स ड्यू शेयर. सो आप देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहें कि लोग डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं बिकॉज देयर आर कंस्ट्रेंट व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर ऑन. अभी लैंडस्केप ये है कि टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो इशू हुई हैं गवर्नमेंट की, वो इट्स अबाउट 22 बिलियन. आउट ऑफ दोस 22 बिलियन, 95% रफली is conventional, which is PIBs and T-bills, which only leaves a meager amount of 1.2 trillion, about 5.5% in terms of Islamic compliant security. So Islamic banking industry वो सिर्फ वो जो green bar है आपका 1.2 trillion का, उसी में से खरीद सकती है. We cannot go and buy PIBs and T-bills which are 20 trillion. This chart basically shows you the red chart on the left hand side is the total conventional deposit, which is 14.5 trillion rupees in Pakistan. Against that, those conventional banks have got a pool of PIBs and T-bills which they can purchase, which amount to about 20 trillion rupees. That means उनके deposit से 140% size जो है वो PIBs और T-bills की. That means it's so much easier for them to buy the T-bills. वो एक Reuters screen पे जाते हैं, Bloomberg पे जाते हैं, and in 5 seconds they can buy billions of rupees of T-bills or PIBs. उसके एवज इस्लामिक बैंकिंग में अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक डिपॉजिट इज़ 3.4 ट्रिलियन, और जो उसके एवज जो 141% की सिक्योरिटीज़ कन्वेंशनल में हमारे पास सिर्फ 35% अवेलेबल है. And that is 600 million in Ijara Sukuk, 200 million in Bemojil, which is a temporary figure appearing there because ये स्टेट बैंक के साथ Bemojil one-off हुआ था, and then Pakistan Energy Sukuk, which is a long-term thing. तो अगर आप वो निकाल दें तो वो 35% 30% रह जाती है. तो obviously compared to conventional of 141%, the 30% becomes a big impediment for Islamic banking to take more deposits. Islamic banking deposit growth आपको नज़र आ रही है इसमें, only about $1 trillion in 2014 and now 3.5 trillion and growing double digit compared to conventional banking industry. तो इसमें जो green bar है आपको जो नज़र आएगा वो है जो हमें minimum sukuks अभी चाहिए in order to really sustain ourselves. Even if we issue this 1 trillion or 1.5 trillion, will still be half the size of the deposit compared to 1.4 times in the conventional banking industry. Sukuk issuance during 2020-2021 अगर आप देखें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रहा था, and we are grateful to Ministry of Finance and State Bank that they did issue these sukuks, but due to some obviously legitimate reasons, January से ये बिल्कुल dry up हो गया है, and there has been no sukuk issuance since January of 21, and obviously the Islamic banking market as a result उनको जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो डिप्लॉय नहीं हो पाती है, डिप्लॉय होती है तो बहुत कम रेट्स पर डिप्लॉय होती हैं. तो हमारी सिंपल आस्क ये है कि रेगुलर सुकूक इशुएंस हो. जो आई एम हैप्पी दैट फाइनेंस मिनिस्टर himself said that Governor State Bank has also repeatedly mentioned that we will help on that,
And number two is we feel that like we did the energy sukuk, we can do bilateral ijara transaction with Islamic banks and Islamic windows as well, guaranteed by government of Pakistan. इसका एग्जांपल ये है कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो हम इशू करते हैं RDA पे, वो those are that is using an Islamic asset which is the Karachi airport, बट उसके पीस मील इशू हो जाता है. तो जब इस्लामिक बैंक्स को लिक्विडिटी ज़्यादा हो, जिस बैंक को भी हो, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक की विंडोज़ हो या इस्लामिक बैंक्स हो, तो दे कैन गो एंड परचेज दिस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट अ प्री डिटर्मिन्ड स्प्रेड बेसिस. तो उसके लिए आपके साथ कभी बैठ के स्टेट बैंक में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ हम बात कर लेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. अस्सलाम वालेकुम. This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos.